आज डियर फ्रेंड हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नेक्स्ट पोएम को लेकर के प्रेजेंट हैं और जिसके बारे में बात करेंगे। बस आप सभी से यही कहना है कि पूरे इंटरेस्टिंग मूड में होकर के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और एक लाइक कर दीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एक्सकर्जन 1814। टूर क्या होता है? सैर सपाटा होता है। आइए इसके बारे में बात करें। एक्सकर्जन इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट मिस्टिकल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, composed just after the closing of the great poetic decade 1798 to 1807 in 1808 and पब्लिश्ड इन 1814। डियर फ्रेंड, आइए बात करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ये कितने में डिवाइड है इसके बारे में अभी मैं कंफर्मेशन आपको कर देता हूं। तो चलिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 9 बुक्स में एंड देन चलिए डियर, एंड देन इट दिस बुक्स the poet has presented his mystical approach and love towards nature. The poem begins with one evening walk of the poet when he was moving alone in the forest and spent a few hours in the discussion with peddler, hermit, and the pastor. तो डियर फ्रेंड आगे देखते हैं। शो द पोएम कंटेंट 4 कैरेक्टर। पोएम में 4 कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से हैं? द पोइट, पेडलर, हर्मिट एंड पास्टोरस है। वन डे द पोइट मूविंग अलोन इन द फॉरेस्ट मीट टू ए स्कॉटिश पेडलर who is living in a half decayed but and was an old man. The poet discussed with him on the mysterious beauty of the nature. Then the poet and peddler went forward and encountered with a hermit who was busy in worship prayer. The poet begins to discuss with him on the mysterious nature of God because the poet thinks that he is an aesthetic, but he discussed his story in brief that he was a great traveler and roamed the western continent, Europe, during his youth, as with his wife and 2 children. He was working in a private job, but when he was returning from America to England, his wife and 2 children passed away. So he became a hermit and began to live in a forest and isolated life. But here I am fully satisfied because here, under the custody of nature, I am living peaceful and pleasurable life. But poet is not satisfied with his response. So they all proceed to forward to with the pastor who is living beside the churchyard, and the poet discussed with him on the death and immortality, which is the key note of human life on the earth. The pastor suggested that we are transit and कहा कि सौर मोमेंट us object of nature and our life is only object of time and immortality is a gift of God. Dear friends, so the poem is based on Wordsworth's view on man, nature, God, and immortality. The poem is related to the poet's 3 days journey to Cumberland district and the longest poem of Excursion. Among the 9 poems is Margaret. The poem is composed in blank verse. This is very important. And Wordsworth has taken the theory of mystics from William Black, who is regarded the father of mystic poetry in England. तो डियर ये था और इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।